सुपर किंग्स के लिए भी खेले हैं। सामने इफ्तिकार इस बार गेंद की गति को बहुत धीमा किया, गुड लेंथ गेंद, और वहां कॉन्वे ने भी किसी तरह से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पढ़ तो लिया था उन्होंने कि गेंद स्लो है, लेकिन पिछली गेंद पर चौका लगाया है तो अपना धैर्य दिखाया। शॉर्ट कवर्स के फील्डर बाबर आजम ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। इफ्तिकार की अगली गेंद एक और अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद, पिछली दोनों गेंदें बिल्कुल सही जगह पर। बैकफुट पंच, फिर से कवर्स पर खड़े हुए कप्तान बाबर आजम के पास पहुंचा, उन्होंने सीधा थ्रो किया विकेट कीपर रिजवान के पास, थोड़ा सा प्रैक्टिस की उन्होंने, और कोई रन नहीं पिछली दो गेंदों पर। इफ्तिकार अहमद लेफ्ट राइट आर्म राउंड द विकेट, इस ओवर की एक और अच्छी गेंद ऑफ फॉर मिडिल स्टंप पर, जिसे हल्के हाथ से खेला, खुद आगे बढ़ते हुए फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और वापस बहुत जल्दी अपने बॉलिंग मार्क पर एनसी एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए पार के छठी ओवर में इफ्तिकार। राइट आर्म राउंड द विकेट डेविड कॉनवे के लिए, इस बार हल्के हाथ से खेला, शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ, जब तक शॉर्ट फाइन लेग से दौड़कर गेंद को फील्ड करने आए शाहीन शाह अफरीदी, गेंद को थ्रो करे विकेट कीपर की तरफ, तब तक रन बनाने का अवसर था और एक रन आराम से पूरा किया डेविड कॉनवे ने। उनके निजी स्कोर में इजाफा होता जा रहा है और यहां न्यूजीलैंड का स्कोर 34 बगैर किसी नुकसान के। डेविड कॉनवे खेल रहे हैं 16 पर, रचिन रविंद्र खेल रहे हैं 14 के व्यक्तिगत स्कोर पर, और इफ्तिकार अहमद का पहला ओवर इसमें केवल 5 रन आए, एक चौका लगा, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी वापसी की रचिन और डेविड कॉनवे के खिलाफ इस ओवर में गेंदबाज इफ्तिकार अहमद हैं। शाहीन शाह अफरीदी अपने ओवर के लिए तैयार हैं और यहां 6 ओवर के बाद स्कोर 34 बगैर किसी नुकसान के बहुत सोच समझकर बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बैट्समैन, कोई ज्यादा अतिरिक्त जोखिम नहीं उठा रहे हैं, जबकि पावर प्ले चल रहा है और अच्छी खासी समझ में आ चुकी है उन्हें विकेट। Next one is short in length and that's been pulled away but probably carried down to the boundary. Does it have enough legs? It does. Down to the backward square leg boundary for 4. In the air, went after Devon Conway and Shaheen Afridi. Pitching is short, inducing a hook there from Devon Conway. He has a long leg for that, but long leg picked his, but Devon Conway picked his spot there. There you are, and went in the air, was airborne for a long time, but went to the backward square leg boundary for 4. So Devon Conway now executing a few strokes in the last couple of overs. Afridi this time to Conway, that's down the left side. And has he got bat onto that? We'll know in a moment. Yes, that's 4 runs. Waited for it at the last moment. Just rolled his wrist on that one, as fine as one can get it. Just to the right of a diving Mohammad Rizwan. Down to the side screen in front of us for 4. Gloriously played. That's the advantage of playing the ball late. Waited for it. Very last moment. Just rolled his wrist and helped the ball on its way. Got 4 runs in the bargain. New Zealand now getting on to roll over here. 42 they are. Picking up the scoring rate the last 2-3 overs significantly. Couple of lovely extra cover drives we saw from Ravindra in the last over. Now Conway. Here is Afridi this time to Conway and gets an outside edge. He does get that outside edge. That ball on the leg and middle stumps, just leaving the left-hander. And probably thigh pad or maybe just an inside edge that well fell short of first slip for sure. First slip is also wide enough, which means that Shaheen Afridi were probably bowled short and induce the batters to play the square drives or go after them square of the wicket. Here's Shaheen Afridi this time. That's been pulled around the corner, but there's a fielder placed precisely for that stroke at long leg. Just a single. One more to New Zealand, 43 for no loss. And Conway is 25 of 25. Conway was the more sedate of the two. Now Conway doing the stroke play. They're mixing it together very well, Ravindra and Conway. There's a one slip which is wide, almost at a second slip position. There's a square third man inside the 30 yard. A cover point inside 30 yard. A catching extra cover. And Babar Azam himself at mid-off. Next one is on the leg and middle stumps. Pushed down to mid-on, where it's fielded by Aga Salman, and no addition to the New Zealand total, which is 43 for no loss. Started relatively sedately, the New Zealand opening batters.
now getting into the groove. Also, I would say that the Pakistani bowlers didn't beat the batters too many times. Though they bowled wicket to wicket on several deliveries, there were occasions when they erred and gave away wides. Next delivery, and that's beautifully played on the leg of Bill Stumps in the slot. A lovely on drive down to orthodox mid wicket for 4. Glorious stroke there from Rachin Ravindra. Got into position on the leg and middle stumps in the slot. Dispatched beautifully. At the end of 7 overs, 47 for no loss. Damodar, Ravindra in particular, has peppered both sides of the ground. 2 extra cover boundaries, now an onside boundary, lovely on drive. He's played front of the wicket, got runs. Conway on the other hand has gone for the pulls and the hooks. जी बिल्कुल के आपने ठीक कहा। और पहले विकेट के लिए 47 रनों की साझेदारी हो चुकी है। डेविड कॉनवे 25 पर और रचिन रविंद्र 18 पर खेल रहे हैं। इफ्तिकार अहमद राइट आर्म राउंड विकेट एक स्लिप के साथ पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए बुलाया है कप्तान ने उन्हें। पहली गेंद हल्के से पंच किया गेंद को बैकफुट पर जाकर, गुड लेंथ बॉल। कप्तान खड़े हैं कवर्स पर, बाबर आजम जोर से थ्रो किया उन्होंने विकेट कीपर रिजवान के पास। पहली गेंद पर कोई रन नहीं। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी इस ओवर की दूसरी बॉल के साथ। एक बार टर्न किया गेंद को ऑन साइड पर, देखना है कितने रन मिलेंगे। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है बहुत ही संभल कर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो शॉट खेले हैं दोनों बैट्समैनों ने बहुत ही एफर्टलेस शॉट। Strokes of the blade have been absolutely well timed for sure. Even that pull of Conway was airborne for a long time, but he picked his spot. Knew there was no fielder at backward square. Interesting to see that Babar Azam has already gotten Iftikhar Ahmed. One would have probably thought that he would have probably gotten Harris Ralph. So pace and spin is the formula for Babar Azam. Next one on the leg and middle stumps, pushed down to short mid wicket inside the 30-yard. And no runs result. Abdullah Shafiq is stationed there. 48 for no loss. 7.3 overs. Here is Iftikhar Ahmed. This time Rachin Ravindra short outside the off stump. Squack it away down to the backward point boundary for 4. Game of margins. Game of margins. Err a little bit on your line on length and you leak runs. Trifle short. Quickly onto that back foot he was, and how well did he play that square cut? Beautifully timed it to perfection. The ball sped through this rapid outfield in this Chinnaswamy stadium. Went absolutely like a bullet to the backward point boundary for 4. And that brings up to 50 for New Zealand, 52 for no loss. The next delivery is well tossed up, as often happens when you pitch short and you go for runs square on the offside. The bowler then tends to give the ball much more air, which he does next time round, does Iftikhar Ahmed. Played with an angle bat down into the covers. Short and land, that's been lofted over there. Will it go down to the fielder? No, it does not. Clears extra count, mid-wicket for 4. One drop to mid-wicket for 4. What a way to bring an end to the 8th over. 56 for no loss, New Zealand. Really on a roll here now. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. Of 8 overs and make that a very good run rate of 7 per over, Damodar. So they're getting that together, the New Zealand openers. जी हाँ, और हमारे स्कोरर वेंकट बता रहे हैं कि 7.4 ओवर में पाकिस्तान के विरुद्ध न्यूजीलैंड ने अपने पहले 50 रन पूरे किए हैं। डेविड कॉनवे खेल रहे हैं 26 पर। रचिन